So hey guys, welcome back to another video of our respiratory system. And I spoke earlier about asthma. I spoke about the types of asthma. I gave you a brief description about how to differentiate between asthma and COPD. I told you about the types of asthma. I told you about the pathophysiology and the histopath findings. Now we'll talk about the three main histopath findings in the sputum of a patient with asthma. Now these three pictures over here, these are very important because they may give you a picture and they may ask you to identify the disease, or they may ask you the name of these things over here. So these are very important. So let us start without any further delay. So what is this thing over here? What are these crystals? You can see these crystals over here. Now they are your Charcot-Leyden crystals. These are Charcot-Leyden crystals. So these are Charcot-Leyden crystals. These crystals are Charcot-Leyden crystals. And then here we have Crayola bodies. And this over here, this is Cushman spiral. Now, these charcoal-laden bodies, they are made up of a protein called as galactin-10. So you can see these three. These are basically the main three histopath findings in the sputum of asthma patient. These are charcoal-laden crystals. These are your Crayola bodies, and this is your Cushman spiral. These three can be found in the sputum of the asthma patient. Now let us go to the clinical findings. So in asthma, you can find seasonal variation. These asthma conditions, they are most common in spring. They are most common in spring. And you can find diurnal changes. That is, they can occur in the morning or in the evening. And I told you earlier that asthma, it is of intrinsic type and it is of extrinsic type. Now the intrinsic one, I told you that the trigger factor, one of the trigger factor is cold. That is why asthma, you can find the asthma attacks are most common in night. In night, the asthma attacks are most common because it is a bit colder at night time, right? So these are most common in night. Now we can find one more clinical findings as recurrent attack of wheezing. You can find chest tightness. You can see a large amount of cough with sputum due to increased amount of goblet cells and increased size of the goblet cells. You can find hyperplasia of goblet cells, which can cause increase in mucus production, which further leads to cough. So you can again have fatigability and poor exercise tolerance. जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ना, they cannot go rapidly up a stairs. उनको इतना जल्दी वो stairs पे चढ़ नहीं पाते. They get fatigue. उनको इतना जल्दी चल नहीं पाते. They get shortness of breath. सांस नहीं ले पाते अच्छे से अगर उनको हम ज्यादा एक्सरसाइज करनी बोले एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से. इसलिए बोल रहे हैं कि उनका जो कंडीशन है ना, इट वर्सन्स विद एक्सर्शन. एकदम से उनको आप चलने बोल दो, एक्सरसाइज करने बोल दो, वो हाफने लग जाएंगे. वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते. उनका कंडीशन और वर्सन होगा. अगर हम उनसे ज्यादा काम कराएंगे और वर्सन होगा उनका कंडीशन. इसीलिए, और आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ना, अगर वो ट्राइपॉड पोजीशन में बैठे तो उनकी कंडीशन ठीक होने लगती है. ये है ट्राइपॉड पोजीशन. ट्राइपॉड पोजीशन. अब इस ट्राइपॉड पोजीशन में कंडीशन ठीक क्यों होती है? क्योंकि ये जो ट्राइपॉड पोजीशन होती है ना, इट ऑप्टिमाइजेस द इंस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स और डायफ्राम को नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है. सो व्हाट डज दिस ट्राइपॉड पोजीशन डू? इट ऑप्टिमाइजेस इट ऑप्टिमाइजेस इंस्पिरेटरी एसेसरी मसल्स और ये जो डायफ्राम को अपने नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है. एंड लेट्स डायफ्राम
come to its normal position. अब what are our accessory muscles? कौन से हमारे accessory muscles होते हैं? So we have sternocleidomastoid muscle, we have scalene group of muscle, and we have pectoralis minor. अब ये sternocleidomastoid का फंक्शन क्या होता है? ये sternocleidomastoid it elevates the sternum. It elevates the sternum. Scalene group of muscles क्या करते हैं? It elevates the upper ribs. Pectoralis muscle का फंक्शन इसका भी हम बेसिकली लगा लो. It also elevates the upper ribs. अब अपने ये तो हो गए अपने एक्सेसरी मसल्स. अपने मेन मसल्स कौन से होते हैं? प्रिंसिपल मसल्स कौन से होते हैं? इंस्पिरेटरी मेन प्रिंसिपल इंस्पिरेटरी मसल्स वो होते हैं अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और अपना डायफ्राम. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? वो भी एलिवेट करते हैं रिब्स को एलिवेट करते हैं. डायफ्राम बेसिकली लोअर लिप्स को एलिवेट करता है और इंट्राथोरैसिक स्पेस भी बनाता है. सो ये हो गए अपने एक्सेसरी मसल्स. और ये हो गए अपने प्रिंसिपल मसल्स. ये हो गए अपने प्रिंसिपल मसल्स. अब हमने बात कर लिया, हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स पता कर ली, हमने पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स पता कर ली, हमने टाइप्स देख लिए, पैथोफिजियोलॉजी देख ली. अब हम जाएंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर. अभी हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम पैच टेस्ट यूज कर सकते हैं. हम जान सकते हैं कि पेशेंट को एलर्जी किस कंडीशन से, किस चीजों से उसको एलर्जी हो रही है, ताकि उसकी लाइफ से वो एलर्जी को हटाओ ना. वो एलर्जन को हटाओ तो उसको अस्थमा का अटैक नहीं आएगा. तो ये है एक एलर्जन पैच टेस्ट, ये हम लोग करते होते हैं. इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी एलर्जन होता है ना वो उसकी बॉडी पे लगाया जाता है और उसको छोड़ देते हैं 2-4 दिन के लिए. बार वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है और पता चलता है कि उसको किस चीजों से एलर्जी है. तो एक पैच टेस्ट हम कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उस इंसान को किस चीज से, उस पेशेंट को किस चीज से एलर्जी हो रही है. और उसके बाद है ही अपना बेस्ट टेस्ट स्पायरोमेट्री. स्पायरोमेट्री में अब क्या दिखता है? जब हम स्पायरोमेट्री करते हैं हमें दिखेगा नॉर्मल और डिक्रीज्ड वाइटल कैपेसिटी पेशेंट की डिक्रीज होगी. उसके बाद मैंने कल आपको बताया था ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में वी हैव एन इंक्रीज्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, increased functional residual capacity and an increased total lung capacity. क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ना, एयरवे ट्रैपिंग हो रही है, एयर बाहर नहीं जा पा रही, इससे रेसिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ज्यादा है और टीएलसी ज्यादा है. अगर आपको कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग वीडियो देखना है तो मैं ऑलरेडी वॉल्यूम और कैपेसिटी से वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. मैं आपको इसका लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी तो आपके लिए इजी रहेगा. तो नेक्स्ट चीजें क्या देती है हमें यहाँ पे? वाइफ कैपेसिटी लो हो गई या फिर नॉर्मल हो गई, इंक्रीज्ड आरवी एफआरसी और टीएलसी. अब डीएलसीओ, जो डीएलसी होता है वो भी नॉर्मल होता है या फिर हाई होगा. अब डीएलसीओ होता क्या है? व्हाट इज डीएलसीओ? डीएलसीओ इज डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बेसिकली ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होती है और यहाँ पे वैसे ही सांस नहीं ले पा रहा है इंसान, इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑक्सीजन कम आ रहा है बंदे के पास, इसलिए डीएलसीओ इज हाई. इट कैन बी नॉर्मल इन माइल्ड कंडीशंस बट इट कैन बी हाई ऑल्सो. सो डीएलसीओ कैन बी नॉर्मल और कैन बी हाई. एंड द मोस्ट important thing that we have hyperventilation, no? We have hyperventilation in asthma. The person is hyperventilating, which can lead to type 1 respiratory failure. I'll talk about all the types of respiratory failure and the pathophysiology behind it in my next videos. So now just remember that here hyperventilation occurs
which is due to type 1 respiratory failure. And also, you can find one more thing over here. If you record the peak expiratory flow rate using a Wright's peak flow meter, Wright's peak flow meter, you can find that max flow rate, the max flow rate will be less than 250 in asthmatic patients. Normally, the flow rate, it should be 250 to 500 liters per minute. But in asthmatic patients, it will be less than 250. And you all know that we have a diarrhea variations, and mostly in brittle asthma. There's another subtype of asthma over here, which is basically brittle asthma. We have brittle asthma. Now, in this brittle asthma, what happens that this asthma, it is not responsive to bronchodilators. यहाँ पे bronchodilators देने से भी कोई response नहीं होता. And for the treatment of this brittle asthma, we have to give steroids, or we can give adrenaline also. We can give steroids and adrenaline. Now, how is this adrenaline given to the patient? What is the route? We can go for subcutaneous route, or you can go for intramuscular route. And based on the severity, we all know that in asthmatic patients, we have a decreased FEV1. Now, based on the level of FEV1, we can divide the patient. We can divide the patient on mild, moderate, and severe. We can divide the patient based on FEV1 into these three categories. Now, we can call the patient as mild if the level of FEV1 is less than 80. But if the level is less than 50, the patient will be taken into moderate condition. Now, if the FeV1 level is less than 30, the patient will be categorized into severe condition. So this was all about the spirometry part. Now we'll go to the radiological investigations. So what can we use over here? We can have X-ray or we can have a CT scan. Now in X-ray, in milder conditions, normally हमको कोई changes दिखते नहीं है. X-ray में basically थोड़ी severe conditions हो, मतलब 80% लोगों में अगर mild conditions हो ना, तो X-ray में हमें कुछ दिखता नहीं है. लेकिन ये 4 findings हम X-ray में normally देख सकते हैं, अगर बंदे को थोड़ा सा moderate या severe amount of asthma हो तो. We can see hyperinflation of lungs. We can see bronchial wall thickenings. We can have diaphragmatic flattening and hilar enlargement. Now, to make you understand, I have posted two photos of X-ray. This is the X-ray of a normal person, and this is the X-ray of a person with asthma. Now you can see here, you can see how inflated these lungs are, and you can see the normal lungs here. You can see how inflated these lungs are. You can find diaphragmatic flattening over here. And just look how much the diaphragm has, what is the angle of diaphragm over here, and how much flattening is occurred over here. You can find hilar enlargement also. यहाँ पे देखो हाइला enlargement हो रखी है कितनी, और bronchial thickness भी दिख रही है, छोटी छोटी bronchial thickness lines दिख रही है. These are bronchial thickness. लेकिन ये bronchial thickness आपको सीटी में ज्यादा अच्छे से दिखेगी. सीटी स्कैन होता है ना, उधर उधर हमें bronchial thickness दिखती है, हमें एरियाज दिखते हैं ऑफ डिक्रीज एटेन्यूएशन एंड वैस्कुलरिटी. Bronchial thickenings आपको यहाँ पे दिखेंगी डोनट जैसे. These are bronchial thickenings. I'll use a lighter pen over here. These are bronchial thickenings. डोनट जैसे दिखता है ना, these are bronchial thickenings. और these are the areas of decreased attenuation and vascularity. यहाँ पे देखो, these are the areas of decreased attenuation and vascularity. So this was all about the asthma topic. We spoke about the investigations. We spoke about patch tests, spirometry, radiological investigations. We spoke about the clinical findings. We spoke about the tripod positions, about the histopathological findings, about the pathophysiology and the types of asthma. Now,
let me come to this question. I hope it will be easier for you after explaining the whole theory over here. Now, what does it say? It says that a 40-year-old man is being evaluated in the pulmonology clinic and the spirometry showed an FEV1. The spirometry showed, let me use a lighter pen over here. And the spirometry showed an FeV1 and FVC ratio of 0.6. Normally it is 0.8, but here it is 0.6. And an increase in the FeV1 to 15% after an albuterol administration. Now this albuterol is also a beta 2 agonist. It can be used in the place of salbutamol. हमने उसको बीटा एगोनिस्ट दिया और उसके बाद ये बढ़ गया 0.6 से 15% चला गया मतलब द पेशेंट हैज रिस्पॉन्डेड वेल यहाँ पे देखिए अगर गुड रिस्पॉन्स हो रहा है wheezing reduce हो रही है so it is reversible obstruction that is asthma so the patient actually has asthma इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को asthma है फिर डॉक्टर ने उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको started the patient on a daily low dose inhaled corticosteroids long acting beta agonist LABA inhaler and has noticed an improvement in his symptom. The patient wakes up with shortness of breath several times weekly and needs to use a short acting albuterol inhaler several times a day. फिजिकल एग्जामिनेशन शोज बायलैटरल वीजिंग देखिए वीजिंग आ गया वीजिंग हुआ है उसके पेशेंट को आईजीई एंटीबॉडी 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल है आईजीई लेवल हाई है हमें पता है कि जो आस्थमा होता है वो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो आईजीई मीडिएटेड होता है सो द आईजीई लेवल इज वेरी हाई ओवर हियर इयोसिनोफिलिक काउंट ज्यादा है हमें पता है कि एलर्जी कंडीशन है तो इयोसिनोफिल ज्यादा होगा ही होगा You can see a high resolution CT is the normal. CT में हमें changes तभी दिखते हैं radiological investigations में अगर बंदा ज्यादा सीरियस हो सीटी में नॉर्मली हम एस्थमा के लिए नहीं करते हम एस्थमा के लिए बेसिकली एक्सरे ही सबसे पहले करते हैं सीटी हम बाद में लाते हैं अगर और एक्स्ट्रा कंडीशंस हो तभी हम सीटी स्कैन करते हैं अगर पेशेंट सीवियर हो या फिर और बाकी सारे कंडीशन हो जैसे एस्परजिलोसिस तो हम लोग सीटी में जाते हैं ठीक है बट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सफरिंग फ्रॉम अभी इतने सारे इसमें हिंट्स है इतने सारे कि पता ही चल रहा है कि बंदे को एस्थमा खत्म तो ये था अस्थमा के बारे में दिस वाज ऑल अबाउट अस्थमा टॉपिक नाउ दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक सो वील टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इन द नेक्स्ट वीडियो so I hope you understand this topic well and I tried to make it a bit clear and so thank you so much for watching this topic and I'll go to the management part tomorrow. Thank you so much.